ऑफ डिटर्मिनर्स, 5 तरह की किस्में हैं. एंड द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, पहली जो किस्म है वो है आर्टिकल्स. एंड इन फर्दर we will do each and every category in a very elaborate way. Now the first thing, articles a and the, that is very simple and a common concept, but misused it very widely. बड़ा इजी और बड़ा कॉमन सा टॉपिक है. इनके ऊपर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन फिर भी आज तक इसको मिसलीडिंग किया गया है. दिस कंसेप्ट इज वाइडली मिसलेड. हाउ? लेट्स सी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I want to ask one question. Normally people think that these words a or an, they are used before vowels. Vowels and one more term, that is consonant, जिसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं. यू माइट हैव हर्ड इट, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट. इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं. बट द अगेन क्वेश्चन राइजेस हियर, व्हाट आर वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? Some people think that vowels and consonants are the alphabets. But sorry to say, these are not the alphabets. These are actually sounds. The concept of using a, an, and the, these articles are used based on the sounds, not the alphabetic letters. Now let's see more clearly. इसको और ज्यादा थोड़ा विस्तार में कर लेते हैं. That is, let's see how many alphabets are there, or I must say how many letters are there in English language. कितने तरह के अक्षर होते हैं वर्णमाला में इंग्लिश, जो कि अल्फाबेट्स हैं उसमें. जैसे हिंदी में है, पंजाबी में है, इंग्लिश में भी उसके लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं. So mainly they are 26. There are 26 letters. But one more question arises here, that are the sounds and letters, they are same ones, or there are 26 letters and the same as it is there are 26 sounds? The thing is that 26 letters हैं. क्या हमारे पास आवाजें, साउंड्स भी 26 हैं? No. There is the root based learning. There is what we say concept based learning. Suppose, let's see, I write it here, word ship, chin. If we pronounce these words, ship, chin, the very first sound in these words, that is in ship, sh sound is there. Ship. Sh sound is there. Sh. In Hindi, I must say sh. And ch makes ch sound is there. But there is no particular alphabet if we go through these 26 letters. For sh and ch, these sounds are made by two letters, that is S and H and C and H. But there is no particular alphabet in this 26 letter. So
but the sounds are there. Now ये बात समझने वाली है, 26 हमारे पास लेटर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं, साउंड्स हैं, जो कि दो अल्फाबेट्स को मिला के बनी है, उनके लिए कोई एक अल्फाबेट नहीं है. एंड देयर इज मोर कंसेप्ट दैट a one word used in different contexts and produces different sounds. Like if I say that a word orange, in word orange the very first letter produces sound O, and if I say that this one, now in this letter one, again the alphabets are same, but here the O sound produces V, one. Now what it means that a same letter comes in different contexts and produces different sounds. So what it means? Simply guys, I want to tell you that साउंड्स आर मोर देन लेटर्स. आवाजें ज्यादा हैं और एक ही शब्द, एक ही लेटर बार बार कहीं ना कहीं यूज होता है, तो आवाज बदल सकती है. नाउ व्हाट आई टेल यू दैट इज समहाउ एस्टॉनिशिंग, जो मैं शायद आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए हैरानी वाली बात होगी. वो कैसे? वो ऐसे. Now in English language 26 letters are there, but can you imagine how many sounds are there? There are 44 sounds. Please students, pay attention to it. There are 44 sounds. Though this is a debatable issue, a different linguists, they even somehow they are not agree to each other, but what is considered most of the people, that makes rule in English. So most of the linguists, जो grammarians हैं, linguists हैं, linguist means to say जो भाषा को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता है, a person who learns any language in a very deep way. So linguists, grammarians, most of the linguists and most of the grammarians, they believe that there are 44 sounds in English language, and in that I must say you there are 20 vowel sounds. Yes students, please pay attention. There are 20 vowel sounds and there are 24 consonant sounds. 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. There are not 5 vowels. Please make it remember. A, I, E, O, U. They are not the vowels. What I am telling you, they are not the vowels. They are only alphabets, and there are not only 5 vowels, because again and again I am repeating, बार बार ये समझा रहा हूं मैं आपको कि जो vowels हैं वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई अक्षर नहीं है. Vowels and consonants जो हैं वो आवाजें हैं, वो sounds हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में 5 vowels नहीं हैं, 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 वॉल साउंड्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, यानी कि 20 स्वर हैं और 24 जो है वो व्यंजन है. और हर एक भाषा में अलग अलग स्वर और व्यंजन, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन somehow similar, फिर भी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. So please again you must take account this concept that A, I, O, U, these are only letters, these are not the vowels, because vowels and consonants are the sounds only.
which is produced by our this system, that air even somehow produces in our lungs, then comes to the windpipe and then by mouth and simply comes out from our mouth. So that is the system and it takes no seconds. ये जो सारा सिस्टम है ये एयर बेस्ड सिस्टम है. जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है वो पहले हमारे लंग्स में हवा भरती है, फिर वो विंड पाइप में जाती है, फिर हमारे मुंह के जरिए बाहर आती है. और ये सिस्टम इतनी जल्दी हो जाता है कि we do not bother about it. So this is the producing the alphabets, producing the letters. This is the air based system. So 24 vowel sounds हैं, sorry 20 vowel sounds हैं and 24 consonant sounds हैं. And what we are talking about earlier, that is articles. और articles को लगाना, use of a and n, these are based on these sounds, these vowel sounds. So this is all for today.